Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine, inshallah ta'ala. Dear students, the seeking of knowledge is obligatory on every Muslim. Let's start our today's chapter. Today we will start our chapter number 7 on a common cold by Osbert Sitwell. Let's have the introduction of Osbert Sitwell from your textbooks. Osbert Sitwell was born in 1892 and died in 1969. He was a British novelist, short story writer, prose writer, poet, satirist, and autobiographer. He was the writer of elegantly satirical verse and prose. His early verse, like that of his sister Edith, marked a revolt against the sentimental Georgian style popular in the opening decades of the 20th century. He served in the First World War too. That was the brief introduction. Now, let's come to your topic or title of this chapter on a common cold. आम ज़ुकाम के बारे में, ठीक है। आम नज़ला ज़ुकाम हमें होता है आजकल, तो बड़ा ख़ास वाला भी लोगों को हो रहा है, ज़ाहिर बात है, आपको पता है बच्चों, कोरोना पेंडेमिक में, ठीक है। लेकिन आम ज़ुकाम जो शुरू से ही इंसान जिसमें मुब्तला होते हैं, ठीक है, तो वो ये आपको मुख्तलिफ जो है वो रिएक्शंस बताएगा कि जब लोगों को ज़ुकाम हो जाता है तो उनके रवैयों में कैसे तब्दीली आ जाती है, ठीक है, और किस तरह के असरात जो है वो ज़ुकाम मुख्तलिफ लोगों पर डालता है। और जब लोग खांसते हैं, छींकते हैं, तो उनकी आंखें भी जलती हैं। जब आपको ज़ुकाम होता है बच्चों, अस्पताल के बाजू, टांगें, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा होता है, सांस लेने में मुश्किल आती है, हमारी आवाज़ बैठ जाती है, ठीक है। और इस तरह जो है वो ज़ुकाम हमारे पूरे वजूद को तब्दील कर देता है। हमारी ज़िंदगी बदली लगती है, हमारे जो एहसासात हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा रवैया थोड़ा सा अहमकाना हो जाता है, ठीक है, और ज़िंदगी के मज़े बदल जाते हैं, एकदम से यकदम चेंज हो जाते हैं। खाने का मज़ा ख़त्म हो जाता है, खाने की ख्वाहिश जो है वो सिर्फ ये होता है मैं गरम गरम कोई चीज़ ले लूँ, सूप पी लूँ, कोई यखनी ले लूँ, ठीक है। तो लेकिन वो ये कह रहा है आपका राइटर कि जो ज़ुकाम है वो लोगों के रवैयों में सिर्फ वक्ती तौर पर तब्दीली का सबब बनता है, ठीक है। और फिर ये होता है कि एक शख्स तो कभी अपने दोस्त से मिलना नहीं चाहता था, और ज़ुकाम के बाद लोगों पर ऐसा असर होता है कि वो बड़े मिलनसार बन जाते हैं, ठीक है। और जो आपके जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे ये वेटर्स हो गए या जो हेयर ड्रेसर्स हो गए, ये आमतौर पर भी ज़ुकाम का शिकार रहते हैं, ठीक है, कि इनका जो है वो वास्ता काफ़ी सारे लोगों से पड़ता रहता है, और वो आसानी से इस मुतअद्दी मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, ठीक है। मुतअद्दी इसलिए कहते हैं बच्चों, ये एक से दूसरे को बड़े आराम से ज़ुकाम भी लग सकता है। जैसे कोरोना के अब आपको एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, इसी तरह से आम ज़ुकाम भी एक बंदे से दूसरे को लग सकता है, ठीक है। और जो गिरजा घर वगैरह होते हैं, वहाँ पे पादरी जो है इबादतगारों के बड़े मजमे में इसे फैलाते हैं, और डॉक्टर हजरात तो कहते हैं ख़ुद जरासीम लिए फिरते रहते हैं, ठीक है। और फिर ज़ुकाम के मुतालिक कुछ उन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया हुआ है इसके अंदर कि जो है ना वो इंटरनेशनली भी ज़ुकाम ने जो है बड़ा अपना किरदार अदा किया है, और बहुत सारी जंगों में अहले लंदन सिर्फ इसलिए जीत गए थे कि दुश्मन की फ़ौज जो थी वो ज़ुकाम में मुब्तला थी। और जब नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो कि बड़ा मशहूर मारूफ जर्नैल गुजरा है, उसने इंग्लिस्तान पर 19th सेंचुरी में हमला किया था, तो उसे ज़ुकाम हो गया था और उसे हार मानना पड़ी थी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. The text of your chapter. A cold may be common, but it should not for that reason be despised. Many common things partake of the nature of a miracle, and a cold is protean, amazing in its diversity. What an inventive germ must hark behind its malevolent maneuvers, behind these sneezings and coughings and red noses, these pains in the teeth and in the roots of the hair, these sore eyes and itchings in the limbs, this difficult breathing, these voices husky and grating, or speaking out of hearing somewhere, as it seems in another dimension, from mouths that open and shut to no accompanying sound. आपका राइटर बच्चों ये कहता है कि नज़ला ज़ुकाम अगरचे आम है, लेकिन इस वजह से भी हमें इसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। जी, तो बड़ा ही कॉमन बीमारी है, और बहुत सी आम चीज़ें फितरत में बड़े मुआज़े का सा मुकाम रखती हैं, ठीक है। और नज़ला जो है उसकी जितनी डाइवर्सिटीज़ हैं इसके अंदर, तो ये बड़ा मुख्तलिफ और बड़ा हैरानकुन होता है, ठीक है।
और अपने बुरे कामों के पीछे ये नई नई बातें ईजाद करने वाला एक जरसूमा है। और जब आपको छींकें आनी शुरू होती हैं, खांस रहे होते हैं, नाकें सुर्ख हुई हुई होती हैं, तो आपको दांतों में दर्द महसूस हो रहा है, इवन बालों की जड़ों तक भी जो है वो आपको दुखती हुई महसूस हो रही होती हैं, और आंखें दुख रही होती हैं, हाथ पाँव ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ही टूटे पड़े हैं, ठीक है। सांस मुश्किल से आता है, और आवाज़ अक्सर लोगों की बैठ जाती है, या सांस आप लेते हैं तो हड़खड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है किसी और सिम से आवाज़ें आ रही हैं। और बाद अकात आपको लगता है कि छींक मुझे आ रही है, आप मुंह खोलते हैं लेकिन छींक जो है वो कहीं गायब हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह मुँह खुलते और बंद होते हैं लेकिन आवाज़ नहीं आती। Common indeed, why a common cold alters the very existence of him who suffers from it. Not only, I mean, his mode of life, but also the appearance and feeling of it. So that passing events, the very view from the window, are now seen by eyes that have not looked upon such things before. Pathos, together with a slightly hysterical humor, suddenly invade every accustomed act of our everyday existence. The very players of life are transmuted, as at the touch of a witch's finger. Cigarettes become at the best tasteless, at the worst a torture of burning brown paper, emitting suffocating fumes. Food holds no interest for us, and our animal appetites, if we are wise, become entirely centered on hot water bottles and hot punch. Oh, the joy of those cloves and that lemon infusing the steaming glass, and of the steam itself, which, so pungent and fragrant is it, can even now just faintly titillate the sense of smell. Boredom again holds no terror for him who now wishes only to lie down, or better still, rest in bed bookless and untalkative. हकीकतन बच्चों, नज़ला आम तो होता ही है, लेकिन आप ये देखें कि जो आम सा नज़ला है ये भी किस तरह से अपने शिकार को जो है वो उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल डाल देता है। और आपका राइटर का मतलब ये है कि उसकी सिर्फ रहने सहने का अंदाज़ ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शबाहतें और एहसास जो हैं, कुछ मनाजिर जैसे खिड़की में नज़र आने वाले मनाजिर होते हैं, वो तक भी उसको ऐसा लगता है मैंने आज से पहले इन मनाजिर को देखा ही ना हो, ठीक है। और ऐसा लगता है कि मजनूनाना किस्म का मिजाज जो है वो और सोज़ो गुदाज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हो गया। ऐसा लगता है कि किसी विच फिंगर या किसी चुड़ैल की उंगली ने उससे छूकर हमारी तमाम खुशियों को चेंज कर दिया है, ठीक है। और अगर सिगरेटें को पहले बहुत पहले पीने का आदी है नज़ले से पहले, तो वो उसको बेज़ायका लगती हैं, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे उसमें से बस दम घुटने वाला धुआं ही निकल रहा है सिर्फ। जो भी कोई चीज़ खाने पीने की आपके सामने हो, आपको कोई दिलचस्पी नहीं रहती उसके अंदर, ठीक है। और अक्सर ये होता है कि बस हम कहते हैं गर्म पानी की बोतल हो, या फिर ये कि उबले हुए पानी में हम लौंग डाल लें, लीमू डाल के और वो हम भाप ले लें या पी लें हम, ठीक है। तो हालांकि वो इतनी तेज़ बू होती है उसकी लौंग की, लेकिन जब आपके ज़ुकाम हुआ होता है तो अक्सर आपकी सूंघने की हिस्स जो है वो भी मुतासर हो जाती है, ठीक है। और फिर आप बड़े बेजार से पड़े हुए बिस्तर में लेटे रहते हैं, कोई काम ना किताब पढ़ने को दिल करता है, ना किसी से बात करने को दिल करता है, ठीक है। But most of all does the common cold alter the spirit, the very nature of the person it attacks. Those who have many friends are no longer eager to see them, while on the other hand, the friendless and even the unfriendly at once become genial. और होता क्या है बच्चों, जब ज़ुकाम किसी के ऊपर असरअंदाज होता है तो उसकी पूरी फितरत को बदल देता है। जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं उन्हें दोस्तों से मिलने का शौक़ ही नहीं रहता, उसके बरस जो लोग बग़ैर दोस्तों के होते हैं वो बड़े खुश मिजाज बन जाते हैं। If in dead of winter your telephone bell rings to ask whether Mr. Snooks, whom you have never liked and have already ever met, and who you are aware harbors for yourself a feeling of very acute, though as you are inclined to think unjustifiable hostility, may come to see you by appointment, suspect the common cold. I even remember an old and distant cousin of mine who in all her life never troubled herself at all about my existence, calling on me as she was driving down to escort races. अच्छा जी, अगर मौसम गर्मा में जब बहुत उरूज पे होता है, आपके फ़ोन की घंटी बजती है और आपसे पूछा जाता है कि क्या मिस्टर स्नोक्स आपसे मिलने आ सकते हैं, और ये वो शख्स हैं जिन्हें आपने कभी भी पसंद नहीं किया था और जिनके बारे में आप ये जानते भी हैं कि वो आपके लिए अगरचे बिला वजह दुश्मनी के तो नहीं लेकिन मुखालफाना जज्बात ज़रूर रखते हैं, तो आप ये शुबा करने में हक़ बजाने में होंगे कि यकीनन उन्हें नज़ले की शिकायत होगी जो वो आपसे मिलने आ रहे हैं। और इस तरह से उसको अपने दूर के कज़न का मिलना याद है जो कभी सारी ज़िंदगी उसके बारे में परेशान नहीं हुई थी, लेकिन वो जाते हुए एस्कॉर्ट प्रोसेस जो है वो
जगह का नाम है बच्चों, तो वो वहाँ जो है वो पहुँच गई थी। तो कहता है कि वाई हैड शी थॉट ऑफ मी, आई वॉन्डर्ड, नो रेस मीटिंग कुड रिमाइंड एनी वन ऑफ मी, फॉर नेवर हैव आई अटेंडेड सच अ फंक्शन. For a moment, until I saw that black velvet nose, I was at a loss. But then I at once realized that this extraordinary feature really constituted uh, uh, but one more manifestation of microbic malevolence. और वो कहता है कि भला उन्हें मेरे बारे में ऐसे कैसे ख्याल आ गया था, जो उसकी कज़न थी. और मैं सोच रहा था कि जो है ना वो दौड़ों के बारे में कोई इजलास मुझे याद करने का सबब नहीं बन सकता था, क्योंकि मैं तो कभी आज तक किसी ऐसे इजलास में शरीक ही नहीं हुआ था. तो एक लम्हे की तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि वो कैसे आ गए. फिर जब मैंने उनकी सियाह नाक देख ली, जो ज़ुकाम की वजह से जो है वो सियाह हो चुकी थी, तो मुझे फ़ौरन ये एहसास हो गया कि ये जरसूमा भी किसी बुराई के इजहार का गैर मामूली पहलू है. ठीक है बच्चों, यानी जब नज़ला ज़ुकाम हुआ होता है तो लोग जो नहीं मिलना जुलना पसंद करते वो भी जो है ना मिलने जुलने के शौकीन बन जाते हैं. Other persons again, usually of a lonely temperament, become of a sudden gregarious and player loving, afflicted with the desire to visit theatres, lectures, and concert halls, where for a brief hour or two they may splutter and sneeze to their heart's content. But these people you can distinguish at a first glance by a certain look of self importance, an air too of subtle triumph which may marks them off from the healthy of their tribe. Even those who, when well present, are forlorn and meager appearance, are invested with a certain strange radiance. और वो लोग, दूसरे लोग जो आमतौर पर तन्हाई पसंद होते हैं, अकेलेपन का मिजाज रखते हैं, अचानक मिलने मिलाने और खुशबाशी के शौकीन बन जाते हैं. और उन पर इस ख्वाहिश का दौरा पड़ जाता है कि थिएटर देखें, लेक्चर सुनने जाएँ, मौसीकी की जो है मुख्तलिफ़ महफ़िलें हैं जो उनमें शरीक हों, जहाँ वो 1 या 2 घंटे की मुख्तसर सी साथ में जी भर के सांस ले सकें और छींक सकें. लेकिन इन लोगों को आप पहले ही नज़र में अलग से पहचान जाएंगे, क्योंकि एक शख्सी अहमियत और आला फ़तह का उनके अंदर एक अलग सा एहसास होता है, जो उन्हें अपने कबीले के सेहतमंद अफराद से एक अलग ही उनको नुमायाँ तौर पर रखता है वो. और ऐसे लोग जो सेहतमंदी के आलम में भी तन्हा और बेबस नज़र आते हैं, नज़ला जब उनको हो जाता है तो बड़े ख़ास अजनबी सी उनके चेहरों पर चमक दमक आ जाती है, चमक दमक से भरपूर उनके चेहरे हो जाते हैं. ठीक है, ये आपके राइटर्स के बच्चों के ख्यालात हैं. आपका इससे मुत्तफ़िक होना कोई ऐसा ख़ास ज़रूरी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ बातें वो बिल्कुल सही कर रहा है. आम ज़ुकाम में जो है ना वो इस किस्म की कैफियत का हम अक्सर बेशतर शिकार हो जाते हैं. अच्छा, उसके साथ बच्चों आपने बस ये आज के लिए इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह इसको हम कल फिनिश कर देंगे. और आप चैप्टर नंबर 3 चल रहा था आपका क्वेश्चन आंसर्स का, जिसमें ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स वाले चैप्टर में आपने आज करना है क्वेश्चन नंबर 4. जिलेट बर्जेस डिवाइड्स ह्यूमन beings into 2 categories, bromides and sulfides. How far do you agree to this division on the basis of your experience? ठीक है, ये वाला सवाल जो है वो आपने याद करना है चैप्टर नंबर 3 का. और उसके साथ साथ बच्चों आपने करनी है प्रेसी नंबर 9. ठीक है, और ये तो काफ़ी लंबी चौड़े पैराग्राफ है ये. चले मैं रीडिंग कर देती हूँ आपको, ध्यान से सुनिए ज़रा इसे. What is a satellite and what is satellite communications? A satellite is defined as an unattended body revolving about a large one. Earlier, the word satellite was exclusively used to designate a planet's moon. Since 1957, the word satellite has also been used to denote a man-made object put into orbit around another planet. These objects are also called artificial satellites. The concept of using satellites as giant relay towers to receive radio signals from one part of the earth and transmit to another was put forward by Arthur C. Clarke in May 1945. He drew the attention of the British Interplanetary Society to the idea of placing a satellite in an orbit about 35,880 kilometers above the surface of the earth. A satellite at such an altitude can see more than 1/3 of the globe. A system of 3 suitably placed satellites can cover the entire Earth and provide transportation of information from any 2 points on the Earth. The first satellite communication between the outer space and Earth was established on December 18, 1958, when a Christmas message from President
Astronomer was broadcast from a tape recorder on board on an Atlas B rocket that was launched by the US under the project SCORE. SCORE, however, could not rely messages directly, as it could record and play back recorded messages only. SCORE operated for only 13 days before its batteries ran out. A more sophisticated satellite carrier, IB, was launched by the US Army on October 4, 1960, that could receive and rebroadcast messages up to 68,000 words a minute. After the experience gained by launching various experimental satellites, the American Telephone and Telegraph Company launched the world's first commercially developed satellite, the Telestar, on July 10, 1962. The Telestar could receive messages including television pictures from the Earth stations and then retransmit them immediately. A historic exchange of television pictures between three cities, Endor in the US, Gonhilly Downs in the UK, and Pleymoor-Bourdes in France, took place just 15 hours after the Telestar was launched in a low orbit in space. A tremendous commercial value was envisaged when the TriStar satellite successfully communicated with the Earth stations. The event triggered hectic research and development efforts in communication technology. The international nature of communication by satellites gave birth to the need for establishing a single organization to develop a worldwide communication satellite system called the Internet. The Internet is a network that links computer networks all over the world by satellite and telephone. It connects users with service networks such as emails and the World Wide Web. ठीक है बच्चों, इसमें अब आपने क्वेश्चन करने हैं इसके. एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स अ सैटेलाइट एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन. बी है इसका, व्हाट डिड आर्थर सी क्लार्क सजेस्ट ऑन 1945. सी है जी, हाउ कैन द एंटायर अर्थ बी कवर्ड बाय सैटेलाइट्स. डी है जी, व्हेन एंड हाउ वाज द फर्स्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन बिटवीन द आउटर स्पेस एंड द अर्थ बिकेम पॉसिबल. ई है बच्चों, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली डेवलप्ड सैटेलाइट. और एफ है क्वेश्चन, हाउ वाज अ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम एस्टेब्लिश, what is it called and what are its functions. And you can add to the given material in the passage from your knowledge but very briefly. ठीक है बच्चों. और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी, गिव अ समरी ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट सुटेबल टाइटल फॉर इट. इसको आपने ध्यान से पढ़ना है बार बार. मैं इसको शेयर भी कर दूँगी आपके साथ, ठीक है. और उसके बाद आपने इसका टाइटल बनाना है, देखना है, और आपने इसकी समरी भी करनी है, ठीक है. चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.